Hello dear students, good afternoon to all of you. Today we will discuss about our new topic which is second law of motion. Before proceeding to the second law of motion, firstly we discussed about what is the first law of motion. First law of motion is just like here, any object is in a rest of, okay, when we applied here unbalanced force, any force, okay, unbalanced force on the rest object, okay, we applied here force, then this object is moving on in a velocity, it will get velocity. So this is a फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, वी अप्लाइड हियर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑब्जेक्ट हियर भी, ठीक है, देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी ऑन अ getting velocity. This is known as a first law of motion. Okay, so in a first law of motion the object gets acceleration. ठीक है, velocity मिल जाती है उसको, accelerated हो जाते हैं वो आगे की ओर मूव होने. That is the first law of motion. So before proceeding of first law of motion we have some observations. Okay, let me discuss this observation before proceeding, just like here examples. Okay, the some observations are just like here. Table tennis, you know, table tennis game, one table here, okay, and two persons here. One observation, ठीक है, table tennis observation in which the ball hit by the one player by and also by through the second player. ठीक है, बॉल क्या होती है, टेबल टेनिस है, इस साइड से बॉल्स को हिट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, बॉल्स हिटेड बाय थ्रू दिस हियर and get the accelerated ball is coming here and this one is heated by here. Okay, to this tennis ball and here one net. So ball gets here accelerated. ये बॉल यहाँ पे जाएगी, यहाँ से इसने हिट किया बॉल्स को यहाँ से, this will be accelerated and movie reaching to the second player. The ball is accelerated, ठीक है, on in a acceleration form. So this one is first example observation. Here ball is accelerated and the ball is not hurted if we are playing we are doing this by to the tennis table tennis bat. Okay, second one is so this is a truck. When this one is parked in a safe place, so there is no problem. Okay, when this bus is running on a 5 meter per second acceleration and when this heated to any person, then by through this heat the person get dead. ठीक है, the person will be a dead. तो ये क्या हो जाएगा, dead हो जाएंगे because of the heating of the person. Okay, so ये एक और हो गया, बस जो हो रहा है रन कर रही 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से and get heated to person and the person will be a dead. ठीक है, one example, another example, we know all gun. ठीक है, the bullet is fired from the gun. Okay, when any person get this bullet is any person, the person will be a dead, or if it is a very hardly injured. Okay, so these are the examples. The bowlers, the batsman hit the ball and the fielder get catch, okay, of the shot. Okay, so that at the time the bats if the
filter not get hand is back side, so that it will get a heart. Okay, just like I will throw a stone, okay, and you will catch it directly. That means you get a heart in your hand. Okay, dear student. So these are the observation. In this all the observation, we have a ऑब्जेक्ट विद द मास. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, आप देखो टेबल टेनिस में एक बॉल में ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, उसमें उसकी एक मास है. ठीक है, ट्रक इज आल्सो हैविंग अ मास. ओके, बॉल, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल, इट इज आल्सो हैविंग अ बॉल. ओके, मास. बुलेट, also having a mass, and these are all moving with the velocity. Okay, these are all moving with velocity. Truck is moving accelerated in a velocity, ball is moving in a velocity, bullet is moving with velocity. So this is called momentum. Okay, momentum, that means the object is changed with the mass and velocity, so that is known as momentum. Okay, dear students, I hope you understand this momentum. Momentum has magnitude and direction बोथ. ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो क्या होना चाहिए, जो मोमेंटम होते हैं, इट हैविंग अ मैग्नीट्यूड दैट्स लाइक एनी फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर. ओके, नंबर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, एंड डायरेक्शन. ओके, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम. ओके, जितने भी हमने अभी ऑब्जर्वेशंस रीड किए थे, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम बिकॉज this is moving with the mass and velocity. So SI unit of momentum is, mass का क्या होता है SI unit, which is kilogram. Okay, and velocity is meter per second. Okay, this is called SI unit of momentum. So according to this, what is second law of motion? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जो मोमेंटम होगा उसके जो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज होगा विद द टाइम. ठीक है, व्हेन वी अप्लाइड इन अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करेंगे एंड द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी चेंज, दैट इज अ चेंज, दैट इज सेड टू बी एज अ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, क्या हो रहा है टेबल टेनिस में, क्या हो रहा है, जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल्स को इस साइड से एक डायरेक्शन में हिट किया उसने. ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर दैट द बॉल इज हिटिंग ऑन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ चेंज ऑफ द बॉल, एंड ऑल्सो इन अ क्रिकेट बॉलर थ्रो अ बॉल टू द बैट्समैन. ठीक है, बैट्समैन के पास बॉलर जो हो रही है वो थ्रो हो रही है. Okay, and batsman hit the ball in another way. ठीक है, so it will get going on this way. ठीक है, तो that is change of momentum. Okay, तो इसी को बोलते हैं लोग second law of motion. Okay, dear students, let's suppose any object having mass m, which is moving in a straight line with initial velocity u, and get accelerated in a, which is a final velocity v, and the constant force
f with time t. Okay, then the initial momentum is P1 is equals to m u. ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम है, इसलिए हम लोग इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? विद द इनिशियल वेलोसिटी. एंड द फाइनल मोमेंटम is P2 is equals to mv. Okay, this is equation 1, this is equation number 2. समझ में आ गया होगा आपको इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, एंड द फाइनल मोमेंटम. नाउ द चेंज ऑफ मोमेंटम is denoted as a P2. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. Actual this is change with the force, so we directly written here force is directly proportional to initial momentum. The change of momentum with force directly देते हैं, ठीक है. It denoted by force is directly proportional to P2 minus P1. Okay, P2 minus मतलब the final velocity, final momentum minus initial momentum. ठीक है, हम लोग जब वो velocity find out करते थे तो वहां पर हम लोग क्या करते थे? Final velocity के लिए we applied a final velocity minus initial velocity. तो यहाँ पर भी ये चीज होगा. So F is directly proportional to P2. What is the value of P2? P2 is a mv minus mu. Okay, then m is common, v minus u, and force and time. So we applied here time t also, okay, time t also. So F is directly proportional to m, and we know that v minus u upon t, what is this? This is acceleration. So this is a acceleration. This is a second law of motion, and F is k m a, where k is कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसके साथ यहाँ पे हमेशा रहेगा. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर 2 सेकेंड. ठीक है, सो दैट इज द we can say that we write here kilogram meter per 2 second. Okay, and the force is totally depending on this proportionality constant. So when we applied this, okay, when we said mass is 1 kilogram, when we applied 1 kilogram, when we use 1 kilogram of mass, acceleration is 1 meter per 2 second square. Okay, so that we can say that, and the proportionality constant is become also 1, so that we can say that 1 unit of force is equals to k become 1. Okay, we don't know, we can't write it here, you write it. Okay, for some time F is equals to ma, so
we applied a 1 kilogram of mass into acceleration of 1 minute 1 meter per second to square. So 1 unit of mass is denoted as a kilogram meter to second. Okay, so this is a unit of 1 unit force. Okay, and also it can be denoted as a Newton. So this is called 1 Newton. Okay dear students, F is equals to force is equals to 1 Newton. ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, न्यूटन, and symbol of Newton is N. Okay, now F is equals to M. Okay, and when F is equals to mass into acceleration is denoted as the V minus U by T. We can write here again V minus U by T. F is equals to mv minus mu upon t. Okay, so this is our formulation. So again we can write here just like here one example for that. Okay, when just like a bowler throw a ball to the batsman, okay, and batsman hit a ball and the fielder get catch, okay, and suddenly he move out his hand to the back sides. Okay, if it is not back side, that means it is not moving his hand to back side, that means it get a hurt in his hand. Okay, अपने हैंड्स में वो क्या होगा, उनको पेन होगा, अदरवाइज वो अपने हैंड्स को पीछे नहीं खींचेंगे. ठीक है, तो इसके लिए ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है. वहां पर क्या हो रही है, जो बॉल हो रही है वो एक मास, बॉल हैविंग अ मास विद वेलोसिटी. ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रही है, बॉल जो हो रही है वो आ रही है. ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे कैच लेंगे, when we get catch, okay, that means if we suddenly stop the ball, okay, ball is stopped but the mass and velocity is not stopped at the time. Okay, that's get our hand to the hearts to making a force 0 here. Just like here when we said बॉल क्या हो रही है, अभी जब वो जब बॉल जब फ्लाई करके आ रहे, ठीक है, उड़ करके आ रहे, तो इट हैविंग अ फाइनल वेलोसिटी एंड चेंजिंग इनटू द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, सो एट ए टाइम वी कैन से दैट when the ball is stopped, that means initial velocity and final velocity is equals to same. Okay, so at a time F is equals to, हम लोग क्या कर सकते हैं, v के प्लेस पे u लिख सकते हो, u के प्लेस पे v लिख सकते हैं. mv माइनस mv अपॉन v अपॉन t. F is equals to 0. Okay, so at a time the force is 0. Okay dear students, so this is the mathematical formulation of second law of motion. I hope you understand this very easily. Okay, and next video we will discuss about our next topic, which is some numerical.